Hi, myself I am R.BHUSHAN. Welcome to the program The Great Bharat and the Great People. Good evening, Honourable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your per day efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. The photograph what I am showing you, it has been published in DAINIK JAGARAN newspaper. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पावन त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाकर देश के कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने संगम तट पर गंगा आरती में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शियोल पीस प्राइज के साथ मिली $2 लाख यानी कि 1.4 करोड़ रुपए की राशि नमामि गंगे फंड में दान देने की घोषणा की है। इसका इस्तेमाल गंगा को निर्मल बनाने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री ने रविवार को कुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज रवाना होने से पूर्व यह राशि फंड को दे दी। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज आ रही है हवा में तैरने वाली ट्रेन। देश को जहां बुलेट ट्रेन के शुरू होने का इंतजार है, वहीं हमारे वैज्ञानिक इस तकनीक को और आगे ले जाने के काम में जुटे हैं। इंदौर के राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT के वैज्ञानिकों ने बहुचर्चित मैगलेव ट्रेन का प्रोटोटाइप मॉडल बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह ट्रेन पहियों से नहीं बल्कि हवा से में तैरते हुए चलती है। इसे मैग्नेटिक सिस्टम ऑफ चुंबकीय प्रणाली कहा जाता है। फिलहाल ऐसी ट्रेनें सिर्फ जापान और चीन के पास है। जापान में मैगलेव 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है। हालांकि सेंटर के मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी डिवीजन के हेड R.C. सिन्हा कहते हैं कि भारत में 800 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली मैगलेव ट्रेन विकसित कर सकता है। RRCAT में वैज्ञानिक 10 साल से इस तकनीक के ऊपर काम कर रहे हैं। मैगलेव 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 बागवानी, पशु व मत्स्य पालन से खेती अब छुएगी नई ऊंचाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में रविवार को आयोजित किसान रैली में बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन करने वालों के लिए घोषित योजनाओं का शुभारंभ किया। इन क्षेत्रों के लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की राष्ट्रव्यापी योजना की शुरुआत हो गई है। सरकार ने किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने इन्हें कृषि क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानते हुए किसानों वाली सभी सहूलियत दी है। कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अब इन क्षेत्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर की रैली में पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे। इन्हें भी किसान मानते हुए सरकार ने उनके KCC पर 2 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज आर्मी फॉर्म on wiping out terrorists. Pradhan Narendra Modi. Addressing his last Mann Ki Baat before the 2019 Lok Sabha election, Prime Minister Narendra Modi on Sunday said the army had resolved the wipe out terrorists and their harbors following the Pulwama attack. Mr. Modi also announced the suspension of his monthly radio broadcast for the next 2 months in the keeping with the democratic traditions. However, he expressed confidence that he would be back with the program on the last Sunday or May. The result of the elections are expected to be declared by then. Mr. Modi said the martyrdom of 40 CRPF soldiers in Pulwama would keep inspiring us relentlessly to uproot the very base of terrorism and ask people to rally together to take on the challenge of terrorism by forgetting the barriers of caste, communalism, regionalism and other differences. You must have seen how within 100 hours of the attack, retributive action was accomplished. The army has resolved to wipe out terrorists and their harbors. The martyrdom of these brave soldiers and the touching, inspiring stories of their kin give hope and strength to their entire country. किम की ट्रेन पर टिकी दुनिया की निगाहें। उत्तर कोरिया के तनाशाह किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, दुनिया भर की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात वियतनाम की राजधानी हनोई में 27-28 फरवरी को होगी। उत्तर कोरिया से वियतनाम तक की 4000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए किम ने रेल मार्ग चुना है। शनिवार शाम किम अपने लाव लश्कर के साथ ट्रेन पर सवार हुए। इस समय यह ट्रेन भी किसी आकर्षण से कम नहीं है। किम जोंग उस ट्रेन पर अपनी बहन किम यो
जोंग के साथ सवार हुए हैं। पिछले साल जून में सिंगापुर में किम और ट्रंप की मुलाकात के दौरान भी किम यो जोंग उपस्थित रही थी। उत्तर कोरिया के पूर्व खुफिया प्रमुख और अमेरिका के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाने वाले किम योंग चोल की पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी री शू योंग, विदेश मंत्री री याओ योग हो और रक्षा प्रमुख नो क्वाल चोल भी ट्रेन पर सवार हैं। इस बार किम जोंग उनके साथ उनकी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के वाइस चेयरमैन किम प्योंग हे और ओ शू योंग भी पहुंच रहे हैं। बालों से भी पता चल सकता है विटामिन डी का स्तर। बालों से भी पता चल सकता है विटामिन डी का स्तर। वैज्ञानिकों ने बाल की जांच से शरीर में विटामिन डी का स्तर पता लगाने में सफलता हासिल की। अभी शरीर में विटामिन डी का स्तर पता लगाने के लिए खून की जांच करनी होती थी। इस काम में विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती थी। जांच के लिए सैंपल जुटाने वालों के कुशल होना भी जरूरी रहता था। बाल से विटामिन डी की जांच से यह मुश्किल सामने नहीं आएगी। आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की लीना गागा ने यह जांच इस तथ्य पर आधारित है कि विटामिन डी लगातार बालों में जमा होता रहता है। खून में विटामिन डी ज़्यादा हो तो बाल में भी इसका स्तर ज़्यादा दिखाई देता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, डायबिटीज़ से बढ़ जाता है कमर और गर्दन का दर्द। वैज्ञानिकों ने कमर व गर्दन के दर्द और डायबिटीज़ से संबंध का पता लगाया है। ताज़ा शोध के मुताबिक डायबिटीज़ से जूझ रहे लोगों की कमर व गर्दन में दर्द की आशंका अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। Next important fact is in first Air Force Commission's aerial surveillance, hyperspectral imagery to track suspicious movement in dense forest areas. The Indian Air Force IAF has commissioned the development of an aerial surveillance system of monitoring suspicious movement under dense foliage cover along the international border and some parts within the country. This hyperspectral imagery program first for the country seeks to locate and identify suspicious movement and is expected to be operational in the next 2 years. What the program would mean is that the data gathered from the aerial sources would be processed within the minutes. Researchers would be able to tell security forces on the ground of unwanted human presence in the area, their numbers and locations among their outputs. So aerial surveillance system will be track suspicious activities in areas within the dense tree cover along with the border, USP. It will track unwanted human presence, their numbers and locations with the optical and infrared sensors. Who is building it? IAF has roped in former NASA scientist Kumar Krishan as the chief technologist. The next most important fact is Supreme Court evictions order only against the encroachers. February 13 order of the Supreme Court to several states to evict lakhs of claimants finally rejected under the Forest Rights Act FRA 2006 is an outcome of the consistent stand taken by the top court in the case since 2016 that encroachers should be evicted from forest land after due process. On January 29, 2016, a 3-judge bench of the Justice J. Chelmeswar, now retired, AIIMS Sapre and Amitav Roy, retired, held that if the claim is found to be not tenable by the competent authority, the result would be that claimant is not entitled for the grant of any PADHAO or any other right under the Act, but such a claimant is also either required to be evicted from the parcel of land or some other action is to be taken in accordance with law. So these are the most important fact. And the next thing from science and tech and from science and technology. So today I will tell you about the Kala Jar. Kala Jar. Kala Jar or black fever is caused by parasitic flagellate Leishmania donovani that inhabits the phagocytotic cells in the body, organs in vertebrates, and gut in insect host. The vector of Leishmania is sand by fly. A number of species of Leishmania has been recognized which cause of diseases. Control of sand flies that transmit the organism can be done by the use of insecticide that have residual action. The WHO has recognized the Kolkata-based Indian Institute of Chemical Biology
as a major center for dealing with the disease. Kala Jar control strategy is implemented under the National Malaria Eradication Program. Free treatment is provided under strategy. The main drug which is used for the treatment of the disease is sodium stibogluconate, sodium stibogluconate, sodium stibogluconate, sodium stibogluconate, SSG, sodium stibogluconate, sodium stibogluconate. So the main medicine for Kala Jar is sodium stibogluconate. The unresponsive cases are treated with the pentamidine isothiionate with a view to curb the transmission. DDT spraying method is used particularly in villages, and according to the government reports, there is a decline in the cases of Kala Jar. So this is about the Kala Jars. And next thing from the which is very very important, effective leadership. So I want to share you something of Zig Ziglar book, Top Performance. Effective management, whether in athletics, education, family or business, is measured by your effectiveness in managing your personal to get maximum productivity and benefits for your all. To accomplish this objective, there are two things which great managers always do. Number one, they always expect every member of the team to do their best, and number two, they always expect to make certain they get what they expected. There is almost nothing is as demotivating to subordinate as having a complicated project ignored or taken for granted after heart and soul have been poured into the project. The question is, suppose your inspections reveal that project is either unsatisfactory or not up to the standards you feel that the individual is capable of attaining. Do you brag on him or fuss at him? Answer, neither. To brag on any project which represent less than a person's capability is to encourage mediocrity, and the corporate world is already oversupplied with that commodity. You owe that person more than that. To fuss at him or to be harshly critical could well destroy the subordinate confidence and stifle his initiative for future project. You also owe that person and your company more than that. So, what to do you do? Answer, you use a page from my mother's note. Criticize the performance, not the performer. Criticize the performance, not the performer. Effective leadership demands that kind of approach. Extend the hand of encouragement to that person while making it clear that you expect, even demand, that he or she use their ability for maximum result. In short, have that person reaching more for more, but do it without challenging or questioning his worth as an individual. Assure him or her that you really respect and appreciate their ability, and that's why work which is not consistent with their ability is unacceptable. So the core area is criticize the performance, not the performer. Criticize the performance, not the performer. मतलब अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी आपका कोई काम को नहीं कर पाता है तो उसको मत आप कुछ भला बुरा या कुछ भी सुनाएं. उसने जो काम किया उसको बताएं कि उसको कैसे सही कर सकता है, रादर देन उसके ऊपर इंडिविजुअली उसको बोलना. सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई प्रोग्राम. माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी दैट सर प्लीज़ and to the Supreme Court's preamble, DPSP, fundamental rights and fundamental duties must display on each and every public places. And second, sir, more, in every village there should be one sports stadium. And so third is, we should give responsibility to each and every school and management colleges, at least in their 1 or 2 kilometer periphery, minimum annually they should plant 100 trees. So thank you very much to watch my program. Wish you all the best. God bless you. God bless India.